Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmic Green School, Jhareshwar Bharuch. My name is Swati Sharma, and it's class 9th maths, and our chapter is circle. And in this chapter, we learn so many theorems. Okay. In this chapter, we'll also learn. Yesterday, we learned the theorem, which is not in your course, but not in your course now, but this is very important theorem, so you have to learn this theorem also. Okay, means there is only one circle made in three non-collinear points. Okay, understand? So this is our and in this chapter we learn so many theorems. What is relationship between chord of a circle, what is longest chord of a circle, and सेंटर से कॉर्ड का क्या रिलेशनशिप होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड कॉर्ड, एंगल एंड आर्क, ओके, सेंटर एंगल एंड आर्क, एंड what do you mean by segment, sector of a circle. Okay, so there are so many theorem in this chapter we learn. So let's learn all the theorems in this chapter. Okay, first theorem is says us equal chord of a circle subtend equal angle at the center. Okay, now its converse is if the angle subtended by the chord of a circle at the center are equal, then the chords are equal. Okay, so which result we have to find? If from these two theorems we find if two chords of a circle or congruent circle are equal, then they subtend equal angle at their center. Okay, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वल एंगल बनाएंगी, और अगर सेंटर से इक्वल एंगल बन रहा है तो वो दोनों कॉर्ड्स कैसी हैं? इक्वल है. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस इज द result we have find from these two theorems. Okay, now some axioms are there, means two arcs of the same circle are called congruent arc if one are superposed to other. Okay, we know that. And so we can say that if two chords of a circle are equal, okay, अगर दो chords equal हैं, then their arc are also congruent arc are also equal, and if conversely if two arc of a congruent circle are equal, then their corresponding chords are equal. Okay, these are called axioms of equal arc. Okay, now we know if chords are equal then arcs are equal, and arcs are equal then chords are equal. So we can say that congruent arc of a circle subtend equal angle at their center. Okay, and conversely if two arc of a circle subtend equal angle at their center, then the arcs are congruent. Okay, and in fact we can say that if two arc of a circle are equal, then they subtend equal angle at their center, and conversely if two arc of a circle subtend equal angle at their center, then the arcs are equal. Okay, then we learn our third theorem, the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. Theta bisect the chord. And next theorem says the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. Okay, understand? And then we learn there are one and only one circle passing through three given non-collinear points. Okay, understand? And what corollary we have to find, means अगर प्लेन में हमने सर्कल पर कोई बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है ऑफ अ chord, so that perpendicular bisector is must be passing through the center of a circle. Okay, and the perpendicular bisector of two chord of a circle intersect at the center of the circle. ओके, दे आर इंटरसेक्ट. अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं नॉन पैरेलल कॉर्ड्स पर, तो वो बाइसेक्ट करेगा कहाँ पर? सेंटर पर. ओके, अंडरस्टैंड? एंड देयर आर ऑन वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, देन वी लर्न द आवर equal chords of a circle are equidistant from the center.
Okay, equal chords of a circle are equidistant from their center. We learned this theorem 11.6 in our previous video. Now we learn 11.7, that is converse of this theorem is chord of a circle that are equidistant from the center of a circle are equal. Okay, means how to prove this theorem? Just see. Let's draw the circle. Okay, or okay, these are two chords A, B and C, D. This is our center O. Okay, this is perpendicular bisector and this is M and N. Okay, so given AB and CD are chord of a circle with center O, OM perpendicular to AB. OM is perpendicular to AB. It's given. Okay, OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD. Okay, understand? So हमें प्रूफ क्या करना है? AB इज इक्वल टू सी डी. क्या AB इज इक्वल टू सी डी होगा? सो हम क्या करेंगे? ओ ए और ओ सी को ज्वाइन कर देंगे बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ अ सर्कल. ओके, सो लेट्स प्रूव दैट इन ट्रायंगल दो ट्रायंगल मिल रहे हैं ए ओ एम एंड ओ सी एन. ओके, ओ ए एम एंड ओ सी एन. These two triangle we get OM is equal to ON because it's given. OM is equal to ON, it's given. Okay, now OA is equal to OC because it's radius of a circle, and angle AMO is equal to angle CNO because they are perpendicular. अब हमें पता है कि अगर ये perpendicular है मीन्स क्या है? 90 डिग्री. ओके, इफ इट इज़ perpendicular then it is 90 डिग्री. ओके, ये क्या है? रेडियस है सर्कल की, ये हमें गिवन है. सो वी कैन से दैट RHS rule of congruency say though these two triangle are congruent to each other. Which two triangle? Triangle AMO and triangle OCN. Okay, these two triangle are congruent to each other. It's now AM is equal to 1 by 2 AB because perpendicular from the center bisect the chord. अगर परपेंडिकुलर है सेंटर से जा रहा है तो वो क्या करेगा? कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. तो वी कैन राइट इट ए एम इज इक्वल टू 1 by 2 ए बी. सिमिलरली सी एन इज इक्वल टू 1 by 2 सी डी. ओके, सो 1 by 2 ए बी इज इक्वल टू 1 by 2 सी डी बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी. ओके, अगर ये दोनों इक्वल हैं ए एम इज इक्वल टू सी एन, हमने बोला ए एम इज इक्वल टू सी एन इज गिवन. सो इफ़ ए एम एंड सी एन इक्वल हैं तो हम बोलेंगे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज ए एम इज इक्वल टू सी एन. सो वी कैन राइट इट. सो chords ऑफ अ सर्कल that are equidistant from the center are equal in length. Okay, understand? So these are our theorem number 10.7. Okay, now see question number first in exercise 10.4. So what is the question? Two circle of radius 5 centimeter and 3 centimeter. There are two circles are there and the radius are different, 5 centimeter and 3 centimeter. Intersect at 2 points and its distance between their center is 4 centimeter. Distance between their center is 4 centimeter. Okay, so find the length of the common chord. So we have to find the length of the common chord. Okay, so let's do this question. So student, let's see the question number first. Okay, see here, this is the circle. First circle,
which is radius है 5 centimeter. Second circle radius is 3 centimeter and it's given both center के बीच का distance कितना है 4 centimeter. Okay, and this is our common chord AB. Okay, see common chord AB is our common chord. Okay, in both the circle. Okay, so AB is equal to हमें find करना है what is the length of AB. Okay, so to find the AB we know OA is equal to 5 centimeter, O dash A is equal to 3 centimeter. Okay, so in OA O dash, अगर मैं इस ट्रेंगल की बात करती हूँ OA O dash ट्रेंगल की, so in this triangle we write it OA square plus OA square is equal to OO dash 5 square plus it's 25 centimeter. Okay, now OO dash is equal to, if we write out OO dash plus O dash square plus AO dash square is equal to OA square. क्या ये होता है, मिलता है हमें? So OO dash is equal to 4 centimeter 4 square, AO dash is equal to 3 square. Okay, so 3 square 3 whole square. Okay, so what is it given? 16 plus 9, that is 25. Okay, so we can see that here Pythagoras theorem is true. Okay, we can see here Pythagoras theorem is true for this 16 plus 9 is equal to 25. Okay, so this is our right angle triangle. Okay, by Pythagoras theorem we can write it OA square is equal to O dash square plus AO dash square. Okay, understand? So if these are so angle O dash is right angle. Angle O dash पे क्या हो रहा है, हमारा right angle बन रहा है. Okay, understand? So we can write it angle AO dash O is equal to 90 degree, means O dash पर हमारा 90 degree बन रहा है. Okay, ये हमारा हो गया first part. Okay, understand? Now if we talk about second part of this theorem in OB O dash, यहाँ पर भी हमारा सेम रहेगा. Okay, OB O dash is also OB square is equal to 5 square, that is 25 centimeter, and same here O dash square plus BO dash square is equal to 16 plus 9, that is 25. Okay, four square plus 3 square is equal to 25. 16 plus 9, that is 25. Okay, understand? So by Pythagoras theorem we can write OB square is equal to O dash square plus OB dash square. So it's by Pythagoras theorem we know that BO dash O is equal to 90 degree, means first equation and second equation. Okay, this is our first equation, means हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्री है. सेकेंड इक्वेशन से भी ये एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री. ओके, सो इट बिकम अ 180. ओके, अंडरस्टैंड? BO O dash is equal to 90. Okay, understand? BO O dash is equal to 90 degree. So if we add equation first and second, AO O dash AO O dash plus BO dash O is equal to 180. ओके, अगर ये हमारा 180 हो रहा है
मीन्स AO डैश O प्लस BO डैश O इज इक्वल टू 180. 90 प्लस 90 डेट इज़ 180. अगर मैंने दोनों एंगल्स को प्लस किया सो वी गेट 90 प्लस 90 डेट इज़ 180 डिग्री. ओके, अंडरस्टैंड. So we can write AO dash B is equal to 180 minus फोर हो गया. फुल हमारा AO डैश B क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री. ओके, एंड इफ AO डैश B इज इक्वल टू विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ओके, AO डैश B विल बी अ स्ट्रेट लाइन. और इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन देन सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज हियर. ओके, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो सेंटर कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ. हमने बोला AO डैश B इज अ स्ट्रेट लाइन, सो AB इज इक्वल टू O डैश A प्लस O डैश B. ओके, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हमारा यही होगा 3 प्लस 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर. ओके, अंडरस्टैंड. So student, what is the length of AB? AB is equal to 6 centimeter. Okay, understand. So this way you complete the question number first. Okay, now our question number 2 is, if two chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord. Okay, means हमको prove करना है. See, first of all we have to draw the rough figure. If two equal chords of a circle intersect within the circle, see आप अगर आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे आपकी बुक में, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है सेम क्वेश्चन है ये. ओके, देयर इज सेम क्वेश्चन. सो कंप्लीट दिस क्वेश्चन टू सी एग्जाम्पल नंबर 2 एंड कंप्लीट दी क्वेश्चन नंबर 2. ओके, अंडरस्टैंड. So question number 3 is, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection of a center of the to the center makes equal angle with the chords. Okay, make equal angle at the chords. So what is given? AB is equal to CD. Chords intersect at X. Let the chord intersect at X. Now prove what is we have to prove. Angle OXL is equal to angle OXM. Angle OXL is equal to angle OXM. And कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम OL परपेंडिकुलर करेंगे. परपेंडिकुलर we have to draw OL perpendicular to AB and OM perpendicular to CD. Okay, so we have to prove in OLX and OMX. So OLX is equal to OMX because they are 90 degree, it's perpendicular. Okay, and OX is equal to OX because it's common, and OL is equal to OM because they are equal chords are equidistant from the center. We know that equal chords are equidistant from the center. So we write it, triangle OCX is congruent to triangle OMX. Okay, understand. So student, we can write it by RHS, means right angle hypotenuse side. So we can write it OXL is equal to angle OXL is equal to angle OXM by CPCT. Okay, understand. So this way we have to prove the question third. Okay, so student, let's see question number 4. If a line intersect two concentric circles with center O at ABCD, prove that AB is equal to CD. We have to prove AB is equal to CD. Okay, so OM is let's do the construction. Two concentric circle हैं and it's given. Okay, figure is given in your book. See the figure. We have to construct OM. हमने क्या किया, OM कंस्ट्रक्ट किया. मीन्स हमने उस सीकेंड पर क्या डाला है, एक परपेंडिकुलर डाला है. ओके, अंडरस्टैंड.
see, if a line intersect two concentric circle with center O at A B C D, 4 पॉइंट पर हो रहा है कट, हमें बताना है ए बी इज इक्वल टू सी डी. ओके, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी. हमने जो लाइन ए डी है उस पर ओ एम को परपेंडिकुलर डाला है. ओके, नाउ बी एम इज इक्वल टू सी एम, बिकॉज सेंटर से जो परपेंडिकुलर डलता है कॉर्ड पर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. ओके, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. सो ए एम इज इक्वल टू डी एम. सो ए एम इज इक्वल टू डी एम. ए एम इज इक्वल टू, इफ ए एम इज इक्वल टू डी एम, फर्स्ट एंड सेकेंड दो इक्वेशन मिली हमें. बी एम इज इक्वल टू सी एम इज फर्स्ट इक्वेशन, ए एम इज इक्वल टू डी एम इज अवर सेकेंड इक्वेशन. ओके, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सेकेंड माइनस फर्स्ट, इफ़ वी दोनों हम इक्वेशंस को देखते हैं. सो ए एम इज इक्वल टू डी एम एंड बी एम इज इक्वल टू सी एम. सो वी कैन गेट, अगर ए एम एंड बी एम, ए एम में से बी एम को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी, एंड डी एम में से सी एम को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा सी डी, विच इज़ अवर. सो वी हैव टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी. ओके, अंडरस्टैंड. So this way we have complete question number 4. So read out the question. Three girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Okay, Reshma throw a ball to Salma and Salma to Mandeep. Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 centimeter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? Okay, so let's draw the circle. See here, R is Reshma, S is Salma and M is Mandeep. Okay, now we know that from the question we have draw this circle. Okay, and R is Reshma, S is Salma and M is Mandeep. Okay, O is the center. So OR is equal to OM is equal to OS, because the center से distance कितना है, radius is our 5 centimeter. Okay, and RS is equal to 6 centimeter and RM is also 6 centimeter. Okay, so if these are 6 centimeter and this is also 6 centimeter, so we have to find this way. Okay, RM हमें find करना है. Okay, understand. So we have to find RM. Okay student. So student, we have to draw perpendicular from center or to RS. Okay, RS is equal to 6. So RL is equal to 3 because these are perpendicular bisector of the chord. ओके, सेंटर से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. सो आर एल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड एल एस इज ऑल्सो इज 3 सेंटीमीटर. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस ट्रैंगल, सी द ट्रैंगल ओ आर एल, ट्रैंगल इन. सो सी इन ट्रैंगल ओ एल आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर. ओ आर इज 5, RL is 3 and we have to find OL. Okay, so 25 is equal to 9 plus OL square, so 25 minus 9, that is 16. So OL square is equal to 16, so OL is equal to 4. Okay, understand. So we find the OL. OL is 4. Okay, so student, we find OL is equal to 4. Now we say see ORS. ORS. Okay, so 1/2 B into P means अगर हमें एरिया ऑफ ORS फाइंड करना है तो दिस इज 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर. ओके, अंडरस्टैंड. सो स्टूडेंट, OL we have to find OL, and so see triangle ORS. In triangle ORS, if we take RS as the base, so RS is 6 centimeter and perpendicular OL is we have find 4 centimeter. Okay, so 1/2 into 6 into 4. Okay, understand. And
अगर हम बेस चेंज कर दें, अगर हम बेस लें ओ एस इज़ अवर रेडियस, ओके, रेडियस इज़ अवर 5 सेंटीमीटर, सो 1/2 इंटू 5 इंटू आर एन, उस कंडीशन में हमारा आर एन जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओके, अंडरस्टैंड। सो सी, हमने क्या किया, एक ही ट्रायंगल के एरिया को हम 2 टाइप से निकाल सकते हैं। अगर हमने बेस आर एस लिया तो आर एस इज 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, डेट इज़ 24/5, ओके, हमारे पास 24 आ गया। एंड आर एन हमारा दूसरा, अगर हमने उसे ओ एस को अगर हमने बेस लिया है तो ओ एस इंटू आर एन, ओके। सो वी फाइंड आर एन इज इक्वल टू 24/5, डेट इज़ 4.8 मीटर, 4.8 मीटर इज अवर आर एन, ओके, अंडरस्टैंड। So if we find Rn is equal to 4.8 meter. So what is Rm? What is the value of Rm? Rn plus Mn. And we know, if we draw perpendicular bisector, perpendicular from center to a chord, then it bisect the chord, okay. So Rn is equal to 4.8, so Mn is also 4.8, so your value is 9.6 meter. So value of Rm is 9.6 centimeter, okay. So question number 6 you have to do by yourself, okay. Have a good day.